Yeah. Okay. So, what we are going to discuss 50 phrases that you should use when you are in office, and that will create whole lot of impact. Okay. So, if you can see me live here, so please write live with you. Okay. Just write with you here. If you are with me, yeah, great, great. So, welcome you all. So, what I'm going to do, I'm going to share my presentation with you. Okay. I'll share my presentation with you and we'll just talk about it one by one. Okay. Yeah. Welcome, welcome everyone. Yeah. So, these are the 50 phrases that we can use in office. Okay. And we'll cover them all one by one. Yeah. So, I'll take this frame. No, I'll take this frame. Okay, hope you can see me live now. Right, great. Okay. So what we will do is I'll ask you questions and you gotta give me the answer. Okay. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. So the first thing is that, as I told you, that why these phrases are important, because along with vocabulary, these phrases, proverbs, and idioms, they also play a very, very important role. Okay, they do play a very important role in our life. Okay, so we are going to do that. Okay, just a minute. Yeah. So I'll try to give you presentation from outside, or this also will do. Okay. Yeah. And this, I've already told you that why to use these advanced phrases, because they improve your conversational skill, they make you more comfortable and confident, and of course they add some kind of flavor. Okay, so I'll take like different situations where you have to give this. For example, if it comes to giving your opinion, expressing your opinion, how would you express your opinion? So there can be different ways. Okay, like instead of saying I think, you can always say in my view, in my viewpoint. Also you can also say that in my view or in my viewpoint. Okay, so you can write your chat here, whatever. If you have some other phrase, अगर आपके पास कोई अलग phrase है तो आप उसको भी बोल सकते हैं. So यहाँ पर जरूर लिखिएगा. For example, in my view एक है, लेकिन इसकी जगह पर आप in my viewpoint भी लिख सकते हैं. And there's another way to say the same thing, like from my perspective. ओके, अगर आपने कहना हो ना कि मेरे व्यू पॉइंट से, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव इज नथिंग बट योर व्यू पॉइंट. ओके, नाउ देयर आर सिचुएशंस व्हेन यू आर रियली सर्टेन, यू आर फेयरली सर्टेन अबाउट समथिंग. तो आप क्या बोलेंगे? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. ओके, एज फार एज आई नो, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन. जैसे आपने कई बार कहना होता है कि जहां तक मुझे मालूम है. सो हाउ वुड आई से? Yeah, in my point of view, absolutely right. Or as far as I know. Okay. Then there is a thoughtful way of expressing an opinion as well. आप अपने opinion को भी express कर सकते हैं. Okay. So you can say, it seems to me that, yeah, to me, it seems. तो आप ये भी कह सकते हैं it seems to me that, और आप ये भी कह सकते हैं to me it seems. मुझे तो ऐसा लगता है, आपकी क्या राय है? Okay. आप ऐसे भी कह सकते हैं. और अगर आपने आपकी जो सोच है, आपका जो बिलीफ है, उसको बताना है, तो आप क्या कह सकते हैं? यू कैन से आई एम इंक्लाइन टू बिलीव. ओके, आई बिलीव, और आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ. तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप बोलेंगे आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है. और जब आप ये कहना चाह रहे हैं लाइक आई एम इंक्लाइन टू बिलीव, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है. ओके, सो दोनों का आपने ध्यान रखना है. You have to take care of both of these. Yeah, is that clear? So if it is clear, that I'll take the last one. कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछा नहीं जाता है. ओके, nobody ask you, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि मुझे अपनी राय रखनी चाहिए. तो आप अपनी राय कैसे रखेंगे? You will say, if you ask me, okay, I don't want to intrude into your discussion, but if you ask me, अगर आप मुझसे पूछें, तो अगर मुझे कहना ना कि अगर आप मुझसे पूछें, तो आप क्या बोलेंगे? इफ यू आस्क मी. Now tell me, out of these five, I'll give you more. Out of these five, which is your favorite? जरा मुझे जल्दी से बताइए कि इन पांचों में आपका फेवरेट कौन सा है? Which is your favorite? Yeah, give me the answer.
I'm waiting for it. Which one is your favorite? And then I'll go to the next one. Okay. जब तक आप मुझे बताएं कि ये मेरा फेवरेट है, मैं आपको आगे लेकर चलता हूं. Okay. So it can be in my view, my point of view, from my perspective. Okay. So you can use all of these. Yeah. चलो. Let's go to the next one. कभी कभी कैसा होता है कि आपको अग्री करना होता है. अच्छा, आपने अगर किसी से डिसएग्री करना है तो डिसएग्री करने का तरीका बताइए. हाउ वुड यू डिसएग्री? टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, इन माय व्यू, वेरी गुड. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, कुणाल, बहुत अच्छे. अगर आपने कभी कभी किसी से डिसएग्री करना है, हाउ वुड यू डिसएग्री विद समवन? टेल मी, हाउ वुड यू डिसएग्री? आपने किसी से डिसएग्री करना है तो आप कैसे डिसएग्री करोगे? जल्दी से बताइए मुझे. या आई वांट टू नो, लाइक, हाउ डू यू डिसएग्री विद अदर्स? It's very difficult to disagree, no? Sometimes. How will you disagree? You know, there are different ways to do that. And I'll tell you all the ways that you can agree or disagree with someone. How can you do that? There are ways. Number one, when you want to disagree somebody, yeah, back to differ is a very good one. Okay. Welcome, Manojit Bhaumik. Okay. So you can say, that's an interesting point. You made an interesting point, but so आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप उसको भी तवज्जो दे रहे हैं. ओके. हाँ, लेकिन जब कहते हैं ना, आई डोंट सी आई टू आई, प्रीति जी, तो इसमें बस प्रॉब्लम ये होती है कि हम थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाते हैं. तो आप डायरेक्ट ना होकर थोड़ा पोलाइट हो सकते हैं. वेल, यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट, यू मेड अ वैलिड पॉइंट, बट तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आप पहला देखें और लास्ट का देखें, इसी में लास्ट देखिए, तो वो दोनों लगभग एक जैसे हैं. यू हैव अ वैलिड पॉइंट, यू हैव अ पॉइंट, बट लेट्स नॉट ओवरलुक. नहीं, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यू कैन से दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, बट अगर आपने स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट दिखाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट दिखाना है कि मैं 100% आपसे इत्तेफाक रखता हूं, आपसे बिल्कुल 100% आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तो आप कैसे बोलोगे इसको? हाउ वुड यू से दैट? I couldn't agree more. You can also say I can't agree more. You can also say I couldn't agree more. Okay. Yeah, you can use any of this. I couldn't agree more. मैं आपकी बात से इससे ज्यादा इत्तेफाक तो रख ही नहीं सकता, यानी मैं 100%. अच्छा, अगर आपने यहीं पर स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट दिखाना हो, इसी सेंटेंस को मैं कैसे बदलूंगा? जल्दी से बताइए. मुझे स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट दिखाना है. हाँ आयुष्मान, बिल्कुल. आई कुडंट अग्री लेस. सो आई कुडंट अग्री मोर एंड आई कुडंट अग्री लेस. आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज बोथ. और कभी कभी क्या होता है, आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना है, एंड यू हैव टू बी वेरी पोलाइट. आई सी योर पॉइंट, हाउएवर. ये जो जॉइंटर्स है ना, हाउएवर, दो, बट, येट, ओके, स्टिल, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट में बहुत काम आते हैं. इन सारे के सारे कंजंक्शंस को हम बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, लाइक बट, येट, स्टिल, दो, हाउएवर. ये सब उल्टी बात कर दो. जब भी आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना है तो इनका बहुत इस्तेमाल होता है, तो आप खूब इस्तेमाल कीजिए. ओके. आई सी योर पॉइंट, हाउएवर, लेकिन फिर भी आई सी इट सम अदर वे. मेरा मानना कुछ और है. नहीं क्या? So you can always say, and a very good way, a very polite way actually to disagree with somebody is, I beg to differ. I'm sorry, I beg to differ. अब कभी कभी क्या होता है कि आप पार्शली एग्री करते हैं, ओके, बट देन स्टिल यू शो डिसएग्रीमेंट, तो आप क्या कहेंगे? वेल, देयर इज सम ट्रूथ टू व्हाट यू से, बट सो देयर इज सम ट्रूथ टू व्हाट यू से, और देयर इज सम ट्रूथ टू दैट. ये पार्शली एग्री है. ओके. और आप डिसएग्री भी कर सकते हैं बट लगाकर. एडवर्सेटिव कंजंक्शन है कि नहीं? कभी कभी जो मैंने आपसे कहा कि आप दोनों पॉइंट रख सकते हैं, अपना भी उसका भी. यू हैव अ पॉइंट, यू हैव अ वैलिड पॉइंट, जो हमने पहले वाले में किया था, बट लेट्स नॉट ओवरलुक. अब जरा जल्दी से बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा है, इसमें आपका फेवरेट कौन सा है, एंड आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट वन. या, एंड प्लीज डू शेयर इट विद अदर्स. जरा सबको शेयर भी कीजिए सबके साथ. Please share it with others. Okay. And I'll take you to the next slide. मुझे अपना फेवरेट बताइए. ओके. आपका फेवरेट इसमें कौन सा है? या, एंड I'll tell you
द नेक्स्ट वन। हेलो हेलो एवरीवन। ओके, अच्छा एक बात मैं बता दूं कि हमारा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम है और वो आपके सामने है, बट इट इज ओनली फॉर प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ। सो इफ यू आर अ प्रोफेशनल और अ हाउसवाइफ, यू डेफिनेटली कैन टेक दैट पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें मैंने एक कैलेंडर भी दिया है, आप एक फ्री स्ट्रेटेजिक सेशन बुक कर सकते हैं उसमें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप प्रोफेशनल हैं या हाउसवाइफ हैं तभी बुक कीजिएगा। ओके, और दूसरी बात ये भी है कि इसी के साथ साथ आप हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। सो हमारा नंबर है 9648396484। लर्न इंग्लिश विद जीटा को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले भी हम आगे भी करेंगे, और हमारे वीडियोस को शेयर किया कीजिए। और इंस्टा पर मैं अवेलेबल हूँ विनीत विद विनीत पर, एंड लर्न इंग्लिश विद जीटा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। अब बैक टू डिफर इज अ गुड वन। यस खुर्रम, योर फेवरेट, दैट्स वेरी गुड वन। अच्छा, आप सजेशन कैसे देते हैं? हाउ टू मेक सजेशन, दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वन। कि आपने कभी कभी ना सजेशन देना होता है, आपको समझ में नहीं आता यार मैं अपनी राय कैसे रखूं। ओके, सो आप कैसे राय रखोगे? अपनी अपनी राय आप कैसे रखते हैं? ओके, मैं देखिए बताता हूं आपको कैसे कैसे कर सकते हो आप। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो फॉर्मल, एंड द फर्स्ट फॉर्मल इज आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड। वेरी फॉर्मल, रिकमेंड अपने आप में ही वर्ड बड़ा फॉर्मल सा है, तो अगर ये फॉर्मल वर्ड है तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए खूब। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट। ये जो इसमें आगे डॉट डॉट है ना, इसका मतलब ये है कि हमें आगे कुछ लगाना है। सो आई विल पुट सम क्लॉज टू इट। ओके, हम इसके आगे कोई ना कोई क्लॉज लगाएंगे। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट वी स्टार्ट द सेशन नाउ, वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ। सो रिकमेंड का इस्तेमाल जरूर किया कीजिए। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जब सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव। सो व्हाट इज कोलैबोरेटिव? कोलैबोरेट करते हुए, सबको इकट्ठा लेते हुए। सो व्हेन यू वांट टू मेक अ कोलैबोरेटिव वे, देयर इज अ कोलैबोरेटिव वे टू सजेस्ट समथिंग, आप क्या किया कीजिए? आप वी लगा दिया कीजिए। सबसे बढ़िया बात, व्हाट इफ वी डू दिस? नो, हाउ अबाउट इफ वी कंसीडर गोइंग टुमारो? हाउ अबाउट if we do this now, right now? जब आप जैसे ही आपने वी लगाया, it becomes collaborative. And that's a very very good way actually to take your team together. So always use, how many of you, if you're a professional, how many of you use we more often than I? And that's a very good way actually to be a team player. Now sometimes there's an idea coming in, but you want to give a different idea. So somebody gave an idea, and now you would say, okay, that's fine, but wouldn't it be better if we started today? So wouldn't it be better? आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, आप उसको कुछ कह भी रहे हैं। Wouldn't it be better if we do it tomorrow? अच्छा नहीं होगा कि अगर हम इसको कल करें ना? So sometimes what happens that like you want to ask for suggestion, तो आप अपने सजेशन देने से पहले आप उनसे भी लेना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? Hey, I would like to have your thoughts on this. Or simply, oh great Atul, great. Simply you can say, what are your thoughts on that? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? So what are your thoughts on that? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? No, that's a good one. Sometimes you can also say it in different way. You can also say, have you thought about it? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? Or you can also say, have you given it a thought? What about this one? Have you given it a thought? Have you given it a thought to this perspective of the problem? क्या आपने प्रॉब्लम के इस पहलू की तरफ गौर फरमाया है? So गौर फरमाना, have you given it a thought? I would say that yes. Great. Okay, so if you are a professional, you should all use actually these phrases. They are some wonderful phrases. Okay, I'll take you some more, and we'll take one by one. So like we were talking about making a suggestion. Now let's talk about expressing your uncertainty. You're not certain. Okay, you're not sure what to do. So how would you do that? So when you want to say, well, I would do that, but I'm not sure. नो, तो जरा मुझे जल्दी से बताइए, आपने अगर अनसर्टेनिटी शो करनी है ऑफिस में, तो आप ऑफिस सेटिंग में कैसे शो करेंगे? हाउ वुड यू डू दैट? यू हैव टू शो अनसर्टेनिटी, नो? सो देयर आर डिफरेंट वेज अगेन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल,
soften your uncertainty. Soft का मतलब क्या होता है? Soften मतलब बहुत ही प्यार से, politely, and you will say, I'm not entirely sure, but I think we can do this. No, you can say that. Sometimes there is a problem which is a difficult one to deal. So that's a tricky one. Or somebody asks you a question. How do you respond to it? Well, I would say that's a tricky one. ये तो मुश्किल है. So that's a tricky one is a very good one. And you should always use that. That's a tricky one. That's a tricky one for me. Sometimes you don't have the exact information. Okay. So you would say, and then you are uncertain. You don't have information and you are uncertain. So I'd say, I don't know all the details at the moment, but yes, I'll present it tomorrow maybe. So I'm not sure about it. I'm not certain. Say certain, certainty, uncertainty. Speak in a style. You should always adopt that kind of a style actually that creates some kind of impact. So you can say, I'm sorry, I don't have the data up my sleeves right now. I don't have the details, all the details at the moment, but I'll present it to you tomorrow. Yeah? Yeah, great. You'll try this. You should. Sometimes you can also say, well, it's really hard to say for certain, but we can give it a try. कहना मुश्किल है, लेकिन हम इसको एक try तो दे सकते हैं. We can give it a try. And sometimes you don't want to give the answer right now. You want to relate. How do you relate it? Let me get back to you on that. ये आपने बहुत सुना होगा. आप में से कितने लोगों ने ये सुना है? Let me get back to you. Let me get back to you. बार बार. Let me बोल के देखिए. Let me get back to you on that. Let me get back to you on that. तो let me को बना दीजिए let me. Let me get back to you on that. जरा प्रैक्टिस कीजिए बोल के. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आपने किसी चीज को टालना होता है. Okay. Well, I'm not sure, but let me get back to you on that. Very good evening, Namandeep and everyone else. Okay. Great. Okay, let me get back to you on that. नहीं? कितना बढ़िया है? And so good one. I think you should all use it. Okay, आपको सबको ये इस्तेमाल करना चाहिए. Okay, great sign. Okay. So let's go to the next one. Let's go. So पहले मुझे बताइए. Let's give it a shot. Very good one. इसमें आपका favorite कौन सा है? Which one is your favorite? Give me your favorite. Let's give it a shot is a very good one. Okay, चलो ट्राई करते हैं. पर आपका फेवरेट कौन सा है? So जब हम कहते हैं let's give it a shot, okay, तो उसका मतलब होता है try. Give it a try. Yeah. Wonderful. Okay. हाँ, ये बहुत जरूरी है भाई. When sometimes you commit a mistake and you want to apologize. Apologize मैंने माफी मांगना. माफी मांगने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. मैन इज अ बंडल ऑफ एरर्स, शेक्सपियर ने कहा था. हम तो गलतियों के पुतले हैं भाई. ओके, दैट्स अ ट्रिकी वन, इज अ गुड वन. हाउ डू यू अपोलोजाइज बाय द वे? डू यू? दैट्स अनदर क्वेश्चन. डू यू करते भी हो? और अगर करते हो तो कैसे करते हो, जरा बताइए तो. हाउ डू यू अपोलोजाइज? आई वुड लाइक टू लिसन इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. It's really nice to find you all there and you are really participating it well, but I would like to listen it from you now here, that how do you apologize? And that's an art. So I'll give you some wonderful phrases for that. I didn't mean it. So sorry. I'm sorry if I hurt you. I apologize. I'm not, no, I'm sorry. इस ये दूसरे रख दिए हैं तो मैं ये आप मुझे बताइए. ओके, तो यहां पर नहीं है तो ये आपको मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरे हमने रख दिए हैं. ओके, how would you apologize? To err is human. Excuse me is the best one. You do iffy. Very good. Chances of hiding in the media, iffy. Yeah, I didn't want to hurt you. That's a good one. Okay, that's a good one. Great. बहुत बढ़िया. I think all of you have done really well. Okay. And I'll take your questions also, but I would request you one thing. I'm giving an assignment. In the comment section, you give me 5 ways to compliment others. How do you compliment people? आप लोगों की तारीफ कैसे करते हैं? Okay. So आप मुझे बताइएगा comment section में, लेकिन उससे पहले मैं आपके questions ले लेता हूं. I'll take your questions as well. Okay. But इसका ध्यान रखिएगा that you have to
you have to tell me how to compliment others. Okay, एक चीज ये. दूसरी चीज, as I told you, we have got this our personal mentorship program. You can book a free strategic session there, but only if you are a professional, okay, or a housewife. We do it only for them, and you're ready to invest your time, energy, and money there. So you can book your session with this, or you can just write to us, and our number is 9648396484. And of course, don't forget to subscribe to our channel, Learn English with ZiTA. And I'm on Instagram also, by the way. Okay. By the name Vinit with Vinit, and Telegram channel also. Okay. So let's talk now. Okay. Now I would take your questions if you've got any question. I express my apologies. Is a very good one. I didn't want to hurt you. Is another good one. Yeah. So what you can do is you can give me your questions, and I would love to answer those. Okay. If you have any question regarding that, I would love to answer that. Okay. I hope you like this session. Okay. And what we are doing now, we go live every Monday. I'll try to go live once more. Okay. This week. And we'll try to give you such stuff. Yeah. You're new here. So, agar aap new hai Ravandeep, so what you can do is you go to our live section actually there. And in the live section, you'll find a lot of videos, thousands of videos. Okay. And do watch those videos. आप उन videos को देखिएगा and you'll get a lot of stuff there. आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Okay. हमारे playlist भी है, तो उस playlist से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. Okay. Yeah. Any question that you have got, if you've got any question, you can please ask it here. And I would request you one thing, please do share it with others. लोगों के साथ share किया कीजिए जो भी हमारी videos हैं. लोगों को बताइए कि हम क्या काम कराते हैं, कैसे कराते हैं, and all that. Okay. And we definitely would be thankful to you all. Yeah. Hopefully you like the session. Okay. आपको मजा आया session में? Yeah. I hope you like the session. या और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये इंस्टाग्राम है विनिट विद विनित के नाम से. वेरी गुड इवनिंग जिज्ञासा, यू आर लिटिल लेट टुडे. ओके. या सो वी आर ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम विनिट विद विनित, और उसमें आपको हमारी रील्स मिलती रहती होंगी. ओके. या सो यू ऑलवेज कैन वॉच दोज रील्स. ओके. How did you get used to how did you get used to स्पीकिंग? अच्छा अतुल, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको उसमें करेक्शन कर लो जो आपने क्वेश्चन लिखा है. हाउ डिड यू गेट यूज्ड टू? जब भी हम गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे हम आईएनजी लगाते हैं. स्पीक नहीं आएगा, स्पीकिंग आएगा. ये बिल्कुल 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, ये याद रखिए. यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन एम यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन गेट यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. ओके. सो दीज आर स्ट्रक्चर्स. नंबर 1. थैंक यू सो मच खुर्रम, थैंक्स अ लॉट. तो जब मैं बोलता हूं ना, जैसे आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू टेक टी, मैं चाय पिया करता था. लेकिन अगर मैं इसी बात को कहना चाहता हूं मुझे चाय पीने की आदत है या आदत थी, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, या आई वाज यूज्ड टू टेकिंग टी. और मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई, धीरे धीरे मुझे चाय पीने की आदत पड़ गई. आई गॉट यूज्ड टू टेकिंग टी. तो वहां आईएनजी जरूर लगेगा. ओके. ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है, इसलिए अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है. सो आई वुड से कि तीनों स्ट्रक्चर्स को कहीं लिख लीजिए. किसी दिन हम आपको ये बता भी देंगे, पढ़ा भी देंगे. रुखसाना, हेलो, वेलकम वेलकम एवरीवन. ओके. आप लोग थोड़ा लेट हो गए आज. ओके. हम फिर सेशन लेंगे, लाइव सेशन लेंगे, तो आप जरूर आइएगा. लेकिन आप हमारे लाइव अभी भी इस वीडियो को भी आप दोबारा देख सकते हैं. So what you can do is कि you can go back and watch this video again. Okay, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं. खैर, आपने सवाल ये पूछा था, how did I learn English or how I got used to speaking in English. Let me tell you frankly, I put in a lot of efforts actually when I was learning English. But you know, the problem was I was stressing a lot on the knowledge part. Okay, yes, Sanjana. I was stressing a lot on the knowledge part. And that's the mistake that we do most of the time. Don't stress too much on knowledge part. Stress too much on a skill part, which is speaking. The more you speak, the better you become. Okay. So I would request you to speak. And this is what we do in our personal mentorship program also. This is the program that I was talking about. Here also, we really stress a lot on doing part rather than giving a lot of knowledge. So like we have got our talk rooms where
three, four these learners, they will meet and they will speak regularly. Then we have got one-on-one sessions, okay, and then we have got our group sessions. So we do a lot of things, and whatever we do, actually, we do about the skill part, not about the knowledge part. Knowledge part is at our back end. तो वो हम उनको प्लेटफॉर्म का एक वो पूरा के पूरा वो दे देते हैं कि जहां पर हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, एंड देन दे डोंट नीड टू वॉच एनीथिंग, ओके. या सो दिस इज व्हाट वी डू, ओके. तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज ले स्ट्रेस मोर ऑन द स्किल पार्ट, नॉट ऑन द नॉलेज पार्ट, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश. या Yeah, Atul, if you have watched those sessions, it is there. Okay, it is definitely it is there. So any other question that you've got, if you've got any questions, so please do ask me. Okay, otherwise we'll say goodbye. Hope you like the session. और एक चीज और मैं चाहूंगा कि आप इसके कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे जो आप चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं, ओके, सो आप हमें बिल्कुल लिखिएगा और हमें अच्छा लगेगा. और आप सबकी तरफ से मैं थैंक्स तो आपको बोल ही देता हूँ, ओके. और आपने कुछ जो लिखा वो मैं दिखा देता हूँ. देखिए, अंजना ने ये दिया है यहाँ पर. सो आई एम शोइंग इट ऑन द स्क्रीन. आई एम यूज्ड टू हैविंग टी एवरी मॉर्निंग. So can you see this Anjana's remark there, Anjana's comment there on the screen? So now look at this structure. This is the correct structure. What Anjana wrote there. I am used to, then having, then tea. So there are two structures. Can somebody write here? I used to have tea. Can somebody write? I'll show that also. I used to have tea. Hello, Parvinder. So thank you, Preeti ji. Just write, I used to have tea. I'll show it here. So there are two different structures. Remember that. Now this structure means मुझे चाय पीने की आदत है, तो इसको मैं प्रेजेंट में बना सकता हूं. लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि मैं चाय पिया करता था, तो उसको मैं कैसे कहूंगा? मैं चाय पिया करता था. How would I say that? Please somebody write in the comment section so that I can show it. Yeah, मैं चाय पिया करता था. How would you show? How would you? Yeah, that's great. Okay, so you'll say I used to have tea. तो आप देख रहे हैं अभी जिज्ञासा ने हमें दिया I used to have tea. Okay, now there are two different. Absolutely right. अतुल ने भी अभी हमें दिया है. Okay, so this is a different structure. I used to have tea, and the structure that Anjana gave to us. अच्छा, now can you tell me? I got used to having tea. Somebody can you write it? I got used to having tea. मुझे चाय पीने की, एक तो ये था सबसे पहले हमें ये मिला I am used to having tea. फिर हमें अभी अभी मिला I used to have tea. Okay. I was used to have tea नहीं आएगा साई. I was used to having tea. Okay. Yeah, this is also a good one. I am getting used to attending ZiTA classes. प्रीति जी ने बोला. Okay, very good. सो आपने क्या करना है, पहले पहले मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं. मैं आपको पहले दिखा रहा हूं आई यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अब मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा. सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज आई यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. द सेकेंड स्ट्रक्चर इज आई आई गॉट यूज टू इज ऑल्सो. सो द सेकेंड स्ट्रक्चर इज आई एम यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing. Okay, so this is the second structure. I am used to plus verb first form ing. Okay, and the third structure is I got used to plus verb first form ing. नहीं नुकसान, आई वॉज ड्रिंक टी नहीं आएगा, आई वॉज ड्रिंकिंग टी. आई एम यूज टू. ओके, सो आई गॉट यूज टू. द नेक्स्ट वन इज आई गॉट यूज टू. तो मैंने आपको तीनों स्ट्रक्चर भी बढ़ा दिए साथ साथ. देखिए, फायदा होता है गलती करने का. आपने अगर ये गलती नहीं की होती तो मैं आपको ये पढ़ा ना पाता. ओके, आई यूज टू ड्रिंक टी, परविंदर, एंड यू कैन. टी के लिए टेक ज्यादा अच्छा है. ड्रिंक बुरा नहीं होता, खराब नहीं होता, बट जनरली है वो टेक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. ओके, so is this clear? I hope you liked the session. आपको सेशन अच्छा लगा? ओके, अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा. शेयर करना मत भूलिएगा. ओके,
Yes, I got used to. Thank you so much. Thanks a lot. Okay, I'm used to having teas also. Absolutely correct. अमृता जी का भी मैं दिखा देता हूँ. Okay. Yes. ये अमृता जी ने लिखा आई एम यूज टू हैविंग टी, और इसके बाद ही थैंक यू सो मच अमृता जी. आज आपके सबके मैं यहाँ पर ये भी दिखा सकता हूँ कमेंट्स. ओके, टेक्नोलॉजी का ये फायदा होता है. तो आज हमने बैकअप करके रखा हुआ था. ओके, आई गॉट यूज टू कीपिंग लेट आवर्स. इसका मतलब क्या होता है आई गॉट यूज टू कीपिंग लेट आवर्स? कोई मुझे इसका मतलब बताएगा? आई गॉट यूज टू कीपिंग लेट आवर्स. व्हाट डू यू मीन बाय कीप लेट आवर्स? दैट्स अ वेरी गुड सेंटेंस. थैंक यू सो मच प्रीति जी. ओके, आई गॉट यूज टू. देखिए गेट यूज टू आ गया ना, मुझे पड़ गई. नो, टेक एन हैव, दैट्स नॉट डिफरेंट व्हेन यू. देखिए, ये ध्यान रखिए कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होती है एक तो ट्रांसलेशन से दूर दूर हट जाएंगे. हम जब टी की बात करते हैं तो यू कैन यूज टेक, यू कैन यूज हैव, बोथ यू कैन यूज इट. ओके, खैर, कमिंग बैक टू दिस, कीप लेट आवर्स का मतलब होता है देर से सोना. ओके, मुझे देर से सोने की आदत पड़ गई. ओके, थैंक यू सो मच अयान. ओके, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. ओके, और साई ने बोला है आई गॉट यूज टू हैविंग अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस. कीप लेट आवर्स. यस, मेरा हमारा आपसे सवाल है ये, इसका जवाब आप हमें वहां भी दीजिएगा, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताना है कॉम्प्लीमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं. जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब बताइएगा. ओके, स्लीप इन, स्लीप लेट. कीप लेट आवर्स मैंने स्लीप लेट. ओके, हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन. सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा. मुझे बहुत मजा आया, आपको भी मजा आया होगा. ओके, तो बस इसको शेयर कर दीजिएगा. सो फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त